We move on, viewers. The Mumbai court has finished hearing arguments in the Rana's bail plea. The court has reserved its order for Monday. This comes a day after the Mumbai Police justified slapping sedition charge on Navneet Rana and Ravi Rana and said Matoshreeis is sacred for Sena. The lawyer representing Ranas alleged that sedition was slapped with ulterior motives. Ranas also argued that they had no intention to create unrest and that Sena government was trying to punish dissent. Bail hearing in connection with Rana's sedition case has concluded in the Sessions Court today. Both the defense and prosecution concluded their arguments, and the defense are strongly objected to the sedition charge that has been invoked in the FIR against Ranas. In fact, the defense has objected to this charge by stating that they did not, first of all, go to Matoshreeis. They had intention to go to Matoshreeis. They made a call, they made a sort of an announcement to go to Matoshreeis, but they never did that, as it was leading to, it could lead to law and order situation. And those people who actually created chaos, who created all the issues outside Matoshreeis or outside Rana's residence, were government supporters and not their supporters. So by merely having a plan to chant Hanuman Chalisa cannot be called seditious, was the arguments as far as the defense is concerned. Now, therefore, by no stretch of imagination can this be called seditious, is something that the defense went on to say. State government made a certain submission stating that their words and actions were aggressive. It incited scores of people. Their mere plan to go chant Hanuman Chalisa outside the Chief Minister's residence was enough to create law and order situation. It was premeditated, pre-planned. They used offensive words and challenged the state government. It was meant to create public disorder and dissolve the government. Their conduct, despite being active in public life and holding powerful positions, was completely irresponsible. So that's the argument made by the public prosecutor, special public prosecutor today, defending the charge of sedition. So therefore, the arguments have concluded and the orders are awaited on Monday. How can you allow anybody to recite Hanuman Chalisa in front of any house? In front of Chief Minister's house? If you want, you can recite in front of your own house, inside your house, inside temple. If everybody of the country will start to recite Hanuman Chalisa in front of the houses of other people, what will happen to this country? And she is a member of parliament. She is irresponsible member of parliament. All right, you heard the reactions, and let me open this up quickly. Rahul Narvekar, MLA and spokesperson of the BJP. Sanjay Gupta, leader of the Shiv Sena. Now, good evening, gentlemen. Sanjay Gupta, let me begin by asking you, पहले तो sedition लगा दिया क्योंकि ये चालीसा पढ़ना चाहते थे वहां पे, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसको डिफेंड भी किया कोर्ट में और कहा कि देखिए जो मातोश्री है वो एक सेक्रेड स्थान है शिव सैनिक्स के लिए, और ये जो दो लोग हैं ये वहां पे एक तरह से हल्ला करना चाहते थे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती थी. ये क्या आर्ग्यूमेंट है सर? नहीं तो मतलब क्या, जो नवनीत को राणा संसद भवन में प्रभु श्री राम के जब नारे लगे तो उसका उन्होंने विरोध किया. संसद भवन के अंदर प्रभु श्री राम के नारे क्यों लगे? अब एकाएक उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है, वो भी अपने घर में नहीं, मातोश्री के बाहर जाकर, वो भी धौस दिखाकर, दादागिरी दिखाकर. तो जिस तरह की पागलपंती है, उनका मकसद हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, उनका मकसद राजनीति करना है, कुछ और ही है. क्योंकि शतरंज की बिसात पर जिस तरह से बीजेपी अभी तक उनके अंदर, उनके मोहरों में कीट सुमैया थे, कंगना रनौत थी, नारायण राणे फैमिली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर शामिल नहीं हो सके, अपने पुराने साथियों को साथ नहीं ला सके, तो उन्होंने उस शतरंज की बिसात को अब महाभारत में तब्दील कर दिया है. कभी वो राज ठाकरे को लेके, अब वो राज ठाकरे को उसमें लेके आए हैं, भाई से भाई को लड़ाने के लिए, अपनों को अपने से भिड़ाने के लिए, और नवनीत को राणा और रवि राणा भी उसके किरदार है. तो जिस तरह की राजनीति करी जा रही है, शतरंज की बिसात को बदलकर महाभारत के रूप में
तो ये ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने दिमाग की उपज है और जिनमें हो रहे हैं और जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले तो इनकी जमानत हो, अदालत से, कोर्ट से बाहर आए, जेल से बाहर आए, उसके बाद इस पे देखा जाएगा कि ये किस तरह की राजनीति कर रही हैं या किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं। संजय गुप्ता जी, आप ये बताइए, ये आर्ग्यूमेंट तो फिर कहीं भी कोई भी पुलिस या कोई भी राज्य की सरकार दे देगी कि ये जगह सेक्रेड है, यहां मत आइए, ये जगह सेक्रेड है। अगर संविधान सेक्रेड होना चाहिए सर, जो हनुमान चालीसा है वो सेक्रेड होना चाहिए। अगर कोई चालीसा पढ़ना चाहता है तो आप उसको सेडिशन लगा देंगे और फिर कहेंगे कि देखिए ये जो एरिया है ये सेक्रेड है, यहां पे कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए सेडिशन जस्टिफाइड है। हनुमान चालीसा कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है और हनुमान चालीसा को पढ़ने का तरीका है। हनुमान चालीसा या तो अपने घर पढ़ा जाता है या मंदिर में पढ़ा जाता है या कोई समारोह, कोई भी इवेंट कराता है तो उसमें पढ़ा जाता है। ये इस तरह से किसी के घर जा करके ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता। उन्हें अभी धर्म का ज्ञान नहीं है, वो इस तरह से इस चीज को पढ़ने की कोशिश करना चाहती है, करने की बात कर रही है, वो संवैधानिक नहीं है, वो हमारे धार्मिक पंथों के अंदर उसकी व्याख्या नहीं है। उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि जो उनसे उनके कंधों पे बंदूक रख के चलवा रहे हैं, उनको पिटवा रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है और क्या नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से उन्हें अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। संजय गुप्ता जी, क्या आप यही बात किसी दूसरे धर्म के लिए कहेंगे? उनके जो प्रेयर होते हैं, क्या उसका भी ज्ञान है आपको? है तो आप हमसे शेयर कीजिए और बताइए कि आपने कहा चालीसा सड़क पे नहीं पढ़ा जाता है, क्या कोई दूसरा प्रेयर पढ़ा जाता है? नहीं, देखिए, हनुमान चालीसा के विषय में मैं जानता हूँ, दूसरे धर्म की मैं नहीं जानता। हनुमान चालीसा का मुझे पता है। हनुमान चालीसा मैंने या तो अपने घर पे पढ़ा है या मंदिर में पढ़ा है या किसी समारोह में पढ़ा है। किसी दूसरे घर के बाहर जाकर के जबरदस्ती पढ़ने की बात मैंने तो आज तक जितनी मैंने देखी। Let's get a response from the BJP. Rahul Narvekar, MLA spokesperson of the BJP, joining us. Mr. Narvekar, Sanjay Gupta is saying that Chalisa should not be chanted outside your homes. If you want to read it, do it inside the four walls. And now the problem is that the problem for rather Sena is that they have deserted Hindutva for a long time. We are having a few issues in that line with you, but I thank both of you, Sanjay Gupta, Rahul Narvekar, for joining us on this story. We're taking a short break on Times Now. Lots more lined up when we return. Please stay with us. The News Hour Special Edition.